गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज मेरा साइंस से चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो कि चैप्टर 7 है, इससे मेरा आज का प्रैक्टिस लेक्चर 16। हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ ड्रॉ ए डायग्राम। आपको ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स को ड्रॉ करना है और उनके पार्ट्स को लेबल करना है। लेबल द पार्ट विच प्रोड्यूसेस एग, इस पार्ट को लेबल करना है जो एग प्रोड्यूस करना है। एंड सेकेंड, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताइए जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दौरान वो होता है, मतलब कि बैक्टीरियल डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। फोर्थ इज व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या है? व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है? गिव 2 रीजन फॉर एडॉप्टिंग। गिव 2 रीजन फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन ह्यूमन। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स। तो बच्चों ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम you have to first you have to make uterus. You have to make uterus, that is slight you have to make uterus first. इस क्वेश्चन में ड्रॉ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स को ड्रॉ करने हैं। यू हैव टू ड्रॉ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो बच्चों ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप बनाएंगे this diagram, that is and here is the ovary, almond shape like ovary. This is fimbriae and which goes to this. This is also human female reproductive system. And तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहां कह रहा है फर्स्ट इज व्हिच प्रोड्यूसेस एग। तो फर्स्ट में दिस इज फर्स्ट का आंसर है ओवेरी। ओवेरी प्रोड्यूसेस एग। प्रोड्यूसेस एग, कौन प्रोड्यूस करता है? ओवेरी। सेकेंड इज वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में, दैट इज यहां इस जगह का नाम हो जाएगा आपको फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब से ओविडक्ट। ओविडक्ट इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरी हो गया, दिस इज फनल शेप्ड फिम्ब्री एंड दिस इज यूट्रस। दिस रीजन इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वैजिना एंड दिस इज आउटसाइड वैजिना। थर्ड, लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। कौन से ऐसे 2 डिजीज हैं बैक्टीरियल डिजीज जो कि ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअली? नेम 2 बैक्टीरियल डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो बैक्टीरियल डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली इज गोनोरिया। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसीरिया गोनोरोई। ये बैक्टीरियम जिस बैक्टीरियम से होता है उसका नाम है निसीरिया गोनोरोई।
दिस इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉमन टॉयलेट का शेयर करने से और अंडर क्लॉथ को शेयर करने से। ये बैक्टीरिया जो है आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है। दिस बैक्टीरिया वो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में रहेगा। इससे क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है। पेन अराउंड जेनिटिलिया, पूरे जेनिटिलिया के चारों तरफ हल्का पेन रहेगा। तो निशिलिया गोनोरोई is the cause of gonorrhea, which is sexually transmitted disease. Okay. Second sexually transmitted bacterial disease is syphilis. Syphilis is sexually transmitted disease caused by bacteria, and that bacteria is Treponema pallidum. Treponema pallidum is a bacteria which causes syphilis. Okay. It is spread through sexual contact and from mothers to infant में भी ये जाने का संभावना इसका रहता है। So these are the two bacterial diseases. The two bacterial diseases. This why the first का आंसर था कि ओवरी था, सेकंड को लेबल किया हमने फैलोपियन ट्यूब। This is second where fertilization takes place in your fallopian tube. Fallopian tube is a region where fertilization takes place. Okay. इसी रीजन में fallopian tube वाले रीजन में fertilization takes place करता है। And this is the okay, this is your cervixation, cervix। जिसको लेवल नहीं करना है, जिसको लेवल करना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन सा रीजन को लेवल करना था? एक ओवरी को लेवल करना था और दूसरा जो लेवल करना था वो है आपका फैलोपियन ट्यूब रीजन, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्यूल। ओके। और थर्ड लिस्ट टू बैक्टीरियल डिजीज। थर्ड का आंसर है बैक्टीरियल डिजीज इज गोनोरिया। गोनोरिया एंड सिफिलिस एंड syphilis. Syphilis. Gonorrhea and syphilis are the two bacterial diseases. Disease caused by this gonorrhea and syphilis are the two bacterial diseases. Are two bacterial diseases. Two bacterial disease. Disease which are transmitted sexually, which are transmitted sexually, जो transmitted, which are transmitted sexually. Gonorrhea and syphilis are two bacterial diseases which are transmitted sexually. Okay. Fourth is what are contraceptive device? Contraceptive device क्या होते हैं? Give two reason for adopting contraceptive device. तो contraceptive device वैसे डिवाइस होते हैं which are used to prevent pregnancies, unwanted pregnancy से which are used to prevent pregnancies. तो contraceptive devices are those devices which are used to prevent pregnancies. जो प्रेगनेंसी से बचाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं which are used to prevent pregnancy. It include diaphragm, it include condoms, it include condom and intrauterine devices and rest is diaphragm.
रेस्ट हो जाएगा डायाफ्राम। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड डायाफ्राम एंड डायाफ्राम। तो बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। इसमें आते हैं कॉन्डोम्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड डायाफ्राम। एंड लास्ट इज व्हाट गिव टू रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के यूज करने के पीछे दो कारण बताइए। गिव टू रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो कौन किस कारण से हम इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करते हैं? फर्स्ट इज टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करते हैं इससे। और सेकेंड इज टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अंडर चेक। हम अपने देश की पॉपुलेशन को अंडर चेक रखते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल में भी बहुत सहायक है। तो इसके बाद क्या है कि टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, इसमें कौन से दो रीजन है? रीजन फॉर यूजिंग अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब यहां रीजन फॉर adopting contraceptive device first is to avoid unwanted birth, to avoid unwanted birth। अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री अंडर चेक। टू कीप द पॉपुलेशन of the country under control। देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना, ये दिस आर ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का ही काम है। तो हम लोग किस वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करते हैं? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर कंट्रोल। अपने देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच आई हैव ड्रॉन। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फर्स्ट लेवल करना है पार्ट जो प्रोड्यूस करता है एग। फर्स्ट इज योर ओवरी प्रोड्यूसेस एग, एंड सेकंड इज वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा ओविडक्ट भी इसको कहा जाता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और यू हैव टू लिस्ट टू बैक्टीरियल डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। दो बैक्टीरियल डिजीज को बताने हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, जिससे फर्स्ट वाज योर गोनोरिया एंड सेकंड इज सिफिलिस। दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं और स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, एंड दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर, और उसके यूज करने के पीछे, उसको अडॉप्ट करने के पीछे क्या कारण है ह्यूमन में? तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस हैं, दोस डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, एंड इंक्लूड कॉन्डोम्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस एंड डायाफ्राम। तो रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर कंट्रोल। और ये इसके पीछे यही कारण है कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है, डिफरेंट टर्म्स आर गिवन और उस टर्म को आपको समझाने हैं। तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। फिगर का काम है, इसलिए आई एम नॉट इरेजिंग द फिगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, define the following term. Define the following term. Following terms used in relation to human reproduction. To human reproduction. Human reproduction. ओके, तो आपको उस टर्म को डिफाइन करना है, यूज्ड इन रिलेशन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वीडियोस के अंत तक बढ़िए। तो बच्चों, फर्स्ट कौन कौन से टर्म है? फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इज योर implantation. Implantation. Third is your placenta. Placenta. Fourth, gestation period. Gestation. Fifth, parturition. And sixth is ovulation. ओके, इस टर्म को आपको डिफाइन करना है। तो पहले फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। फर्स्ट ये आंसर है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। SATION भी और ZATI दोनों आपका सही है। फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट स्पर्म। मेल गैमीट हम लोगों का स्पर्म है, with female gamete is ovum, that is egg, ovum to form diploid zygote. This is called fertilization. Fertilization is a union of male gamete sperm with female gamete ovum to form a diploid zygote. तो sperm and ovum के मिलने से जाइगोट बनता है, which is diploid. इसी को fertilization कहते हैं। तो you have to define first was fertilization. Second, implantation. Second है implantation. Implantation किसको बोलते हैं? तो implantation बच्चों होता है fixation of young embryo, that is fixation of young embryo in the wall of uterus. In the wall of uterus. In the wall of uterus is called implantation. इसको कहते हैं implantation. This is called implantation. Okay. And
थर्ड इज प्लासेंटा। थर्ड है आपका प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? इट इज ए स्पॉन्जी वैस्कुलर टिश्यू। इट इज ए स्पॉन्जी vascular tissue